under clause 3 are connected. It has to be a matter of public importance with reference to enforcement of fundamental rights. Now, independently, any legislation, any statute, any rule or any regulation would be a matter of public importance or public interest for that matter. Now, in order for this court to assume jurisdiction, now this court does not assume jurisdiction under 184.3 on a legislature, on any law being enacted for want of legislative competence. It has to be ultra vires or violative of the rights, fundamental rights granted. So you say that the word relating to enforcement. With reference to the enforcement of. That you say is the buckle that connects the two things. That is the buckle that connects the two, and that is where it actually prevents, if I may say so, this court to examine constitutionality of a statute on legislative competence. Is legislative competence not in the public interest? As I said, Your Ladyship, this is something, legislative competence alone is something which can only be examined under 190. Is it not a right that everyone has under the Constitution My Lord, that laws are made in a particular way? Legislative competence, of course, as I understand it, what you have to see in the act is an act of parliament, whether Article 70 read with the list permitted it or not, or whether there is a provision of the Constitution which directly confers that power upon the parliament, whether that provision permits it or not. And if those provisions do not permit that legislature to legislate on that particular matter, then yes, this is a legislative competence issue and it is not permissible under 184.3 So to touch. in your opinion, the law is good law, Parliament is competent to make the law, and every provision of the law is valid and does not in any way violate any provision of the Constitution. So then what happens again, I go back to the full court hearing aid, and you are given a right of appeal under that. So are they not then entitled to their right of appeal in the event that the court decides that these petitions are not maintainable, they cannot challenge it? And does that not go to the fact that once again you've put the burden on the court itself to decide when it wants to constitute a full court and block that right of appeal, and when it wants to constitute a smaller bench and allow that right of appeal? And whether the act is in field or is suspended. I think my still illustrious colleague has raised a very valid point, and I was thinking about it during the break. If we read the right of appeal, first of all, it talks about an aggrieved person. Now, I'm trying to envisage a scenario where one would be aggrieved. First scenario. Second thing is, we can, and this is permissible, read down legislation. We can, for instance, read into it that wherever there is a full court, needless to say, you cannot have a right of appeal over the full court, so that one can read down the legislation that those cases. But which right have we determined? What have we taken away from someone? Someone gets an extra right to challenge a judgment, if at all it's an irritation to us. Oh, now you have to have the appeal. Oh, now the review jurisdiction has been extended. So, what are we doing? And it's not conferring this power to an executive functionary, to the legislature, to the president, or to anybody else. It may be nuisance value for us. Our reviews are going, our appeals are going, that sort of thing. What are we taking away? If the judgment is correct and in order, should we shy away from looking at it because someone files an appeal? Yes, it may bring in litigation into the court. That's the downside, may be said. But where is the aggrieved person? Who will be the aggrieved person be? The person affected. Because I think the 184.3, the whole intendment of that was for not for lawyers. It was not for the well-to-do. It was not for the multinationals. It was for the poor, the dejected of society. We have a whole chapter on the principles of policy, which no one bothers to, we don't read. Bonded laborers, transgender, women rights, children, they can't come to court. We can intervene, 184.3 can come to their rescue. So I was looking at things in that perspective. We have to see the whole entire constitution as a whole. We just stuck with one provision that somebody says, hey, please tell me how you aggrieved. I kept asking him, are you aggrieved? He says, no. They couldn't do it, you can do it. That's about the argument that I've understood so far. That's a valid argument on its own. Yes, to be addressed, for instance, the income tax ordinance has certain provisions that have been challenged before the High Court.
Could we entertain it on 184.3? After all, it is a legislation. After all, it's a public interest. After all, it's a taxation matter. It will meet all the tests of public interest. But it is not, because taxation is not a fundamental right. You can't tax or not tax or whatever. Nobody can say my right not to be taxed has been infringed. So go through the High Court route, get a 191 petition, come to the Supreme Court in 184. That is appellate jurisdiction. So we should read the Constitution and not just pick the words. We are just stuck with these words, 2 words also. Who's harmed by this? The only thing is you've taken away our power, you've taken away specifically the power of the Chief Justice. That's one irritant. You've given a right. That's another irritant. You have created another same lawyer. Okay, this person wants to waste money on another lawyer, do so. So his pocket will be lighter. What is it to us? आगे बढ़े थोड़ा सा. Mr. Attorney General, if I may, sorry, here, take you back to what you were saying about, and I understand your point relating to the buckle part of it. So here we have a law which relates to the practice and procedure of the court, and that is, you say, you accept that any law which is ultra vires is against the public interest, but you say the buckle is missing because it doesn't. It has to. It's not just legislative competence alone, but it has to relate to fundamental rights. So I was just If I wondering. may rephrase it before my lord formulates the question, legislative competence cannot be interfered with here. No, I'm just saying, I understand that. So he may care on. Yes. But breach of legislative competence contrary to the public interest. Until it is related to fundamental right, 184(3) cannot be invoked. This is your argument. Ji. So I was just wondering that the subject matter of this law essentially is the practice and procedure of the Supreme Court. Article 10A relates to due process. So surely any law relating to the practice and procedure of any court, but let's take the Supreme Court, which is ultra vires, surely that until it is related to fundamental right, therefore is directly relatable to fundamental. So I was just wondering that And that is where, when passing this threshold, of course, when a petition comes before your lordship, so before this court in the 184(3), these are the 2 things which are So surely any we law examine at related. first instance. Now, once this threshold is met, then, and the burden is just discharged. You पढ़ लें Article 10A. It helps sometimes to refresh our memories. Ji, For पढ़ें. the determination of his civil rights Of his civil right, not the Supreme Court civil rights. आगे पढ़ें. and obligation. obligations, or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due It's process. nothing to do with the Supreme Court's due process. It's his. You have your right of appeal been taken away, your right of cross-examination been taken away, have your right of a statement under 340 been taken away. So that's where then it takes me, my lord, Surely, Mr. and I Attorney- well, just Mr. addressing your Mr. question. Attorney General, the subject matter is legislative competence in relation to practice and procedure. Surely as a matter of principle, it's not a question of whether the law is taking away. It is this due process in and of itself? And if the law is ultra vires, the answer is precisely because it is ultra vires, it can't be due process. So let's, proceeding on Therefore, this, proceeding on this, whatever it says, whether it says I'll go with it. Chief I'll- Justice is masters of the roster or five. I'll go with it, five-member and I'll just, committee let me or just make my whatever. submission on this. I'll This go is with it. what- this When surely somebody is a- brings in, and let's assume, for the sake of argument, let's assume, and for a moment, if it is assumed that yes, it is a matter with reference to fundamental rights as well, then what has to be shown in the first instance is that this legislation fails to enforce or infringes any of the fundamental rights that the citizens may have. Well, if due process is interfered with, surely They have not shown anything to say that there is any due process which they are entitled to under the existing scheme or the scheme as it stood prior to this act. has been We effective. made questions. You can continue. Well- I think we have our own views or opinions. आप चलें आगे. My lord. Now, You have to persuade us, not we have to persuade you. just one question I was just thinking about it. Suppose a provincial assembly or even the parliament
tomorrow makes a law saying after an appeal has been dismissed under Article 185, another appeal would be available to the litigant for before a larger bench. Would that law stand? देखिए, I would rather consider these. Competence की बात कर रहा हूँ. Yeah, let's consider what this law did. Maybe tomorrow that very matter Yes, comes before us. So the question is. A second the appeal. question My is- lord's no, question no, is whether the second no, appeal would no, be not provided. at all. I am questioning the competence. Yeah. The appeal in the Supreme Court under 185 is provided by the Constitution. Can another appeal, which is not specifically provided in the Constitution, can be provided by ordinary legislation? The example I gave you was an extreme example. Right, I mean, the first question is, can by ordinary legislation an appeal be provided where the Constitution specifically does not against orders passed by the Supreme Court? I will add to this question. Is there any और provision वो in the उसमें Constitution उसको preventing जो वो टेस्ट है कि जी वो आइटम 55 का कि जी वो हमने तो इनलार्ज किया, पहले एक अपील थी, अब हमने दूसरी कर दी है, तो इसलिए ये हमारी कॉम्पिटेंस में है. Would that argument stand? Noted, my lord. ये add आप कर- बाद में जवाब दे दें, आगे बढ़ते ऐड हैं. कर रहा हूँ उसमें दूसरी तरीके से. Is there any provision in the Constitution preventing the Parliament from doing so? It's noted, my lord. Now, my lord, if my lord may kindly turn to Article 191. Let's go to Article 191. It has been read out. I'll just read the first part of it, where it says, subject to the Constitution and the law. Mr. Attorney General, Hello. please you read just the preamble of this act and section 3. Yes. Yes, my lord, it has been read out. Talks about Article 10A, Article? 10A. Yes, it does. Specifically, and Article 4, Article 25. My lord. And subsequently in section 3, specifically talks about 184.3. My lord. How this can It does- be it does not- proceeded Three, under yes. Article 199 when specifically it is challenging the mandate of the Supreme Court as per section 3 of this act. My lord. And how that can be moved before the Supreme High Court under Article 199 of the Constitution. My lord, I noted. Noted. My lord, now the question that has come before your lordship is whether this Act, 2023 Act, is covered under the definition of law, howsoever expansive definition, however expansively the term law is defined. My lord, Article 260 has two definitions. One is of an act of parliament and the other is of a federal law. Here we are dealing with the federal law. Article 260 defines a federal law. It says, You say over here, law includes statute law. yes, So, point. yes. In my respectful submission, law can only have one meaning as far as this provision is concerned. But even if it is given an expansive meaning, this act would surely be covered under the definition of law. It's to be covered, then why didn't the Constitution say by an act of Parliament? Why did it use the word law? These words are not interchangeable. They are used in a very specific sense in different articles. And so you have to, the interpretation has to be given to the word law and not to just say, just because law includes legislation, so here it will be legislation alone. Law has a meaning, and if the Constitution wanted to say just by an act of Parliament, it would have used those words. Your Ladyship, when we look at the provisions from where the Parliament draws its Why did you legislative look at 75(3)? जी 75(3) and 141 and 142 as well. पढ़ लेते हैं जरा, उसमें दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो गए.
when the President has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be under the authority of Majlis Shura Parliament. Now, if we turn to Article 8.2, for the sake of this submission, where any law which is inconsistent with fundamental rights is void, Article 8.2 says, the state shall not make any law. Now, the state is not just the parliament, the state is the province, the governments and the assemblies and any authority which has the power or is authorized by law to impose any taxes. आप फरमा रहे हैं कि law, and you refer to the definition of federal law. It doesn't say federal law, it says... It does not. What I'm saying is... I have a question for you. Suppose a provincial assembly under Article 191 law बना देती है, बना सकती है? Oh, 2000 के अंदर 2000 Supreme Court deals with that question. Yes, they cannot be answered. Because the power with respect to legislation with respect to regulating the court's jurisdictions or powers flows from entry 55, so 191 or 175 too, for that matter. Respect, I draw your attention to entry 58. Relates to the federation Entry also. 58 Yes. पढ़े ना? Ji. Kindly read it. Matters which under the constitution are within the legislative competence of parliament or relate to the federation. So therefore it seems to me, and I put it to you as a question, that actually entry 55 has nothing to do with Article 191. The power that is specifically conferred on Parliament to make statute law, and in terms of Article 191, is relatable to entry 58. Entry 55 has got nothing to do with Article 191. And this connection, first of all, excludes the example that I gave of a provincial assembly making a law over here, right? And secondly, it establishes that here there is a direct grant by the by a specific article of the Constitution on Parliament, as opposed to the general grant as conferred by Articles 141, 142 and so on. That's a general grant. This is a specific grant. Because precisely it is a specific grant, it relates to a specific entry 58. So I would put it to you as a question that entry 51 has no relevance for the present issue. Entry 55. Has no relevance. This is a matter between, insofar as law is concerned, statute law, Act of Parliament, the connection is 191 and entry 58. I would say to you, entry 55 has got nothing to do with it. What would you say to that? My Keep lord, it in mind and move on. well, now, my lord, if my lords may kindly turn to Article 141. This is with respect to reference to the use of term law in Article 191. Should be read with Article 260. 260. Act of Parliament. So here is the word is law, so you can Yes. read together. And 141 and 142 also is in continuum, my lord. 141. Subject to the Constitution, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। तारीख में पहली मर्तबा फुल कोर्ट की समाअत पीटीवी न्यूज और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त नशर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म दौरे में बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकातें और अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा करेंगे। मुल्क भर में बिजली चोर और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुतादिद गिरफ्तार, जुर्माने आयद। तकसीम कार कंपनियों का बिजली चोरी के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रखने का अज़्म। सहूलतकारी में मुलव्वस मुलाजिमीन के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कराने का ऐलान। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशें। अवाम का निगरान हुकूमत और पाक फौज की कार्रवाइयों का खैर मकदम। चीनी की स्मगलिंग और डॉलर माफिया के खिलाफ किए गए इकदामात से इनकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है।
ऐसी कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए, अवामी राय। इलेक्शन कमीशन का हल्काबंदी कमेटियों के काम की रफ्तार का जायजा। हल्काबंदी कमेटियां अपना काम हर सूरत 26 सितंबर 2023 तक मुकम्मल कर लें ताकि 27 सितंबर 2023 को इब्तदाई हल्काबंदियों की इशाअत को मुमकिन बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, ₹1.27 सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 53 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 110 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,866 पर ट्रेड कर रहा है। मोदी सरकार का मुल्क की बदनज़मी पर से आलमी तवज्जो हटाने की भौंडी कोशिशें। इंतखाबात से कबल सियासी मफाद के लिए मन घड़त ऑपरेशंस की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक थिएटर ड्रामा। मकसद पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाना है। भारत सियासी मकासद के लिए पुलवामा ड्रामा रचाना चाहता है, जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में पहली मर्तबा तारीख में फुल कोर्ट की समाअत पीटीवी न्यूज और पीटीवी नेशनल पर नशर की जा रही है। आपको लेकर चलते हैं। This is existing laws. Yes. We've given but continuation. law. Yeah. And any other legal instrument having the force of law. Now, surely, judge-made law is law. ये Leonard Council. With the greatest of respect, if it's observation coming from the bench, I have severe reservations for this. I'll respond to that Because it's not a question, it's a statement. No, I want to disassociate myself from this My lord, statement. I know the basis of this question and I will address it. I'll address There is no such thing as judge-made law. सब पॉडकास्टर बन चुके हैं, हर आदमी चक्कर है। Clause 2 कुछ of बताइए। Article 260. Leonard Attorney General. पहले जरा वो clause 2 of आज जरा Article गला 260 बैठा। Clause 2 of Article 260. जी, yes. Clause 2, Article 260. जी, an ordinance is included, yes. kindly pardon जी. In the Constitution, Act of Parliament or Federal Law or Act of Provincial Assembly shall include an ordinance promulgated. Yes. ये That Leonard Attorney General, the Parliament and its supremacy is because of its representative character. Now, if there is a law, की पहली एल्बम का नाम क्या था? an act of the Majlis Shura, नहीं, वाकई में and that पहली। is in conflict छोड़ो, इतनी with तकलीफ the क्या देनी? judgment of even a full court, whether that act of the Parliament will prevail or the judgment of this court. Parliament. And if there is a judgment which has been rendered on the basis of, and this is where the principle of legislative overruling flows from, that if there is a judgment expounded
तो ये तो बल्कि ज्यादा उसको अहमियत दी जा रही है रादर देन उसको निगेट कर रहे हैं। और राइट तो नहीं है 184(3) का, राइट आपके सारे महफूज हैं, जो आइन देता है, जो कानून देता है। ये नहीं कि आपने 184(3) की पिटिशन डिसमिस कर दी तो 199 में आप नहीं जा सकते हैं, या आप सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, जो भी चीज़। यहाँ तो लोग अजीब अजीब चीज़ें, जी मेरा इससे पैसे उधार हैं, वो जाके 184 डाल दिया उसने, हमने उसको डिसमिस कर दी। रजिस्ट्रार ने राइटली मेंटेनेबिलिटी भी किया, अपील है, हमने उसको डिसमिस कर दिया, इवन दो जस्ट वेस्टेड अननेसेसरी टाइम ऑफ अ जज ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। So I don't know what are we taking away? Back to the same question, what are we taking away? ये सब इसमें इस वक्त क्या सिस्टम चल रहा है? 184(3) में सिस्टम क्या चल रहा है? दो सिस्टम्स हैं। एक है कि जब कोई पिटिशन आती है, जब कोई पिटिशन फाइल होती है तो वो ऑफिस के इससे होके जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस वुड फर्स्ट एग्जामिन वेदर इट मीट्स द थ्रेशोल्ड और नॉट। इनफैक्ट उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो कहते हैं कि जी ये नहीं मीट करता, एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर, यू फाइल अ appeal. So that is one route. The 184(3) का दूसरा है suo moto. Now, this provision, in fact, cures the problems in the process on both counts. First, 184(3) की जो registrar ये power exercise कर रहा था, that power has now been given to this committee, the three senior most, Chief Justice and two senior most judges. You see, the power of registrar could be appealed in chamber, but in 3 members committee where the appeal lies. It is the 3 judges, my lord. 3 judges. ये बात ठीक है कि उसमें ये बात हो सकती है कि जी उसकी कोई आपको जो है वो फिर आगे हेयरिंग नहीं होगी, हेयरिंग नहीं होगी, मगर जी साहब आप ये बता देना कि अगर 2 जजेस या 3 जजेस बेंच चल रहा है, जैसे कि पुराना सिस्टम है, उसमें एक अगर 3 मेंबर समझते हैं कि दिस इज केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो रेफर करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और जस्टिस इनकार कर जाता कि तीनों से एग्री नहीं करता। He has all the power, more power than 3 judges sitting in the court. The Chief Justice alone, sitting in a chamber, can undo this. And the suo moto particularly, उसमें तो और ज़्यादा फिर problematic है, because उसमें तो खुद ही कर रहे हैं, वो खुद ही examine कर रहे हैं। 3 में भी the process is that if the committee thinks that it's a matter of 184(3), they'll mark it to a bench which is not less than 3. If they think it's not, they'll send it to a 2-member bench maybe, or whatever, wherever. It's not throwing out the list. And my lord, as my lord the Chief Justice has just observed, it is not that other than 184(3), the constitution of this country or the laws of this country do not provide any remedy. May I add to this? My lord. All that the committee will be doing, raising an objection. Yes. Objection to the effect, and that is for us internally to provide an appeal against My lords that can order. suitably amend the rules You and see, perhaps again, provide an appeal. the question is that since 1980 had not amended our rules, that is why the Parliament was forced to amend them. Had we amended them ourselves, because the bars were raising questions, the public was raising questions, the litigants were raising questions, we actually forced the Parliament to do it for us. हेलो हाँ आईफोन 15 रिलीज हो गया ना, क्या हो गया यार? ये कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए हैं लेकिन वही सेम गलती हो रही है, वो डंडन लिख रहे हैं लेकिन वो टैग नहीं कर रहे लोग। बहुत अच्छा काम गाइस आपको बताया कि सिर्फ कमेंट में डालने लगना, आपने इस पोस्ट पे 5 लोगों को टैग करना है, और जब हमारी टीम पूरी देख सकते हैं वर्किंग कर रही है, जो आपके कमेंट्स है सबके कमेंट्स देखते हैं, लेकिन मैंने कहा एक दफा आपको बता दूं कि आप टैग करना ना भूलिएगा, 5 लोगों को टैग करना और अकाउंट को फॉलो करना लाजमी है। हेलो हाँ आईफोन 15 रिलीज हो गया ना, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। आईफोन 15 रिलीज हो चुका है और आप ये आईफोन 15 फ्री भी विन कर सकते हैं। कैसे विन करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। आईफोन विन कैसे करना है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट आईफोन 15 बात तेरी प्यारी लगे दुनिया। आपने जो बात कही कि अब खुद में जब बैठेगी तो उसमें उस राइट ऑफ अपील का क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो ये है कि राइट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर कैसे आ सकती है जब 185 दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नबील है। 3 अपडेट्स जो है यहाँ पे मेरे पास 3 फोन्स में आई हुई है। 2 है iOS 17 की आरसी वर्जन, एक पब्लिक बेटा डेवलपर बेटा वाली, और यहाँ पे है iOS 16.7 का एक बेटा वर्जन जो कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इन 2 अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। आरसी वर्जन है यानी कि फाइनल स्टेबल वर्जन होता है iOS 17 का, वो यहाँ पे हमारे पास पहले ही आ गया है। आप सब
that नहीं we'll किया है, तो enhance 18 your सितंबर jurisdiction को तो उन्होंने 18 एक और सितंबर 84 को की देखने अपील मिलेगा। बना इंशाल्लाह दी है। सबसे पहले हमारी वीडियो तो enhance ही करने देखने की फाइल मिलेगी की भी और फिर एक सबसे और पहले नहीं भी अपील देखने मिलेगी, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो हमारी होती है, इसलिए सेकंड आपको अपील जितना तो है, सपोर्ट हमें करते वैसे ही हैं। तो बताया यहाँ पे कि- इस वाले अपडेट में क्या Speaking कुछ for खास है, myself, क्या नया है, Leonard 6.5 Attorney GB के General, आसपास का अपडेट क्यों Leonard है, Attorney और General, इस speaking अपडेट को for करने के myself. बाद Why आपको not फाइनल then a स्टेबल third वर्जन appeal मिलेगा, or या fourth फिर ये appeal अपडेट नहीं करना or a चाहिए और fifth फिर आपको appeal? फाइनल Leonard, स्टेबल मिलेगा। obviously फाइनल it's स्टेबल the वर्जन है, सभी Parliament सवालों के won't जवाब do मैं आपको absurd दूंगा। things, बेटा and वर्जन of स्टेबल course, वर्जन कैसे आना है वो no, it's बताऊंगा, not a कि मैंने question of आपको वादा sanity, किया था, हर because साल this आपको वादा करता हूँ कि undercuts जिंदगी the रही review तो जो बेटा वर्जन whole से आपको concept स्टेबल of वर्जन review, पे जरूर लेके जाऊंगा। तो जिंदा में the रह गया, इसलिए मैं finality आपको जीबी का of अपडेट से पहले judgments, जो दोनों फोन्स the है res उसके ऊपर judicata iOS is regarded as one of the most 17.0 ही चल रहा था, अभी भी वही fundamental चलेगा। principles of अवेलेबल the फ्री स्पेस 14 Pro Max administration पे of 700 Surely GB does. थी और Exception, iPhone 14 पे no, अगर आप बात 484.8। कर रहे हैं अपडेट तो से ये तो पहले का बिल्कुल बिल्ड नंबर heavy हो दोनों में गया। एग्जैक्टली नहीं, सेम था। infinity पब्लिक नहीं है, वाले में obviously, जिसके you know, एंड में it ये talks था, और about the अपडेट से पहले का जो Parliament मोडेम here, फॉर्मेट था it's दोनों ही not डिवाइसेस में वो था 2.08.02। अपडेट के बाद यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में अवेलेबल फ्री स्पेस जो है 1 से लेके 2 GB के बीच में बढ़ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर 5-10 GB कम हो जाती तो फिक्र करने की बात थी, लेकिन अभी यहाँ पे बढ़ गई है, तो बेफिक्र होकर आप ये अपडेट कर सकते हैं इस मामले में एटलीस्ट। अब अपडेट के बाद का यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो देख सकते हैं आप, एग्जैक्टली सेम है 21A329, यानी कि जो पब्लिक बेटा है और जो डेवलपर बेटा है दोनों के ऊपर जो अपडेट आई है वो एग्जैक्टली सेम है। इसलिए जो पब्लिक बेटा वाला फोन है ये मैं साइड में रख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो डेवलपर बेटा वर्जन है या पब्लिक बेटा वर्जन है जिसके अंदर आरसी वर्जन आया है iOS 17 का, वो एग्जैक्टली सेम है। इसलिए एक ही डिवाइस पे हम बात करेंगे। iOS 17 का जो आरसी वर्जन है, जो कि आप फाइनल स्टेबल वर्जन बोल सकते हो, अगर एक आध अपडेट कोई और एप्पल ने पुश किया तो अलग बात है, अदरवाइज आरसी एक ही आता है, उसके बाद जो है फाइनल स्टेबल वर्जन आता है। अगर कोई और आएगा तो मैं बताऊंगा, छोटा मोटा चेंज रहेगा, छोटे मोटे बग फिक्स रहेगा उसके अंदर। अभी इसके अंदर काफी कुछ नया है, वो देख लेते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पे लिस्ट जो है बहुत लंबी है और इतने सारे नए फीचर्स जो है iOS 17 में आपको देखने मिलेंगे, जो कि जो फाइनल वर्जन की वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें सारे फीचर्स आपको बता दूंगा ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। पहले ही बना चुका, फिर से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर न्यू आया है इस आरसी वर्जन के अंदर वो बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं आईफोन की सेटिंग के अंदर। यहाँ पे मैं लाइट मोड डाल देता हूँ ताकि इजीली आप देख पाए। यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे हैप्टिक्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको हैप्टिक फॉर रिंगटोन एंड अलर्ट के ऑप्शन देखने मिलेंगे, जहाँ पे ऑलवेज प्ले का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपका फोन किसी भी मोड में हो तो हैप्टिक फीडबैक आपको मिल जाएगा अलर्ट्स और रिंगटोन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि साइलेंट मोड में ही जो है आपका फोन वाइब्रेट करे, हैप्टिक फीडबैक दे, तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइलेंट मोड में ही नहीं दे तो वो भी कर सकते हैं, बाकी सभी मोड में होगा। और नेवर प्ले करेंगे तो सारे हैप्टिक्स आपके ऑफ हो जाएंगे जब आपका फोन का रिंगटोन बजेगा या फिर कोई भी अलर्ट आएगा। तो इसको फिलहाल मैं ऑलवेज प्ले पे रख देता हूँ, ये नई सेटिंग आई है यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे जो वेलकम चेंज आया है iOS 17 के आरसी वर्जन, वो है नए रिंगटोन्स के साथ। तो यहाँ पे आप क्लासिक में जाएंगे तो आपको सारे पुराने रिंगटोन्स जो है आपके देखने मिल जाएंगे, जो ये ओपनिंग वाला अपना रिंगटोन है वो। लेकिन अब जो नए रिंगटोन्स आए हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये पहला एक रिंगटोन आया है, फिर उसके बाद ये एक है, आप कैसे ये है, ये इस तरीके के काफी सारे रिंगटोन्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। मैं इसका कोई फैन नहीं हूँ, जो अपनी सिंपल सी रिंगटोन है वही मैं रखता हूँ, लेकिन आप रखना चाहे तो रख सकते हैं ये सारे रिंगटोन। और यहाँ पे कस्टम रिंगटोन मैंने कोई लगा के रखा था, उसका वीडियो बनाया, एप्पल ने स्ट्राइक दे दिया तो वीडियो अपनी हट गई। मैं फिर से वीडियो बनाने वाला नहीं, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी टोन स्टोर में एप्पल सेल करता है रिंगटोन, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है जब हम बताते कोई और मेथड। इसी के साथ नए टेक्स्ट टोन भी जो है आपको देखने मिलेंगे, ये अपना डिफॉल्ट वाला है, लेकिन आप चाहे तो ये सारे रख सकते हैं। जैसे ये नया है, फिर ये है, where the whole full court is hearing it, the question of appeal मैं does तो not यही वाला arise. रखने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं पुराने वाले आपको टोन मिले तो ये क्लासिक में आपको सारे देखने मिल जाएंगे। साउंड एंड हैप्टिक्स में ही आप नीचे चले जाएंगे सबसे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने मिलेगा। इधर उधर टेक्स्ट, इधर उधर सेटिंग्स एप्पल करते रहता है, तो हेडफोन सेफ्टी और पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो यहाँ पे आपको बॉटम में देखने मिलेगा। अगर आपकी कंट्री में क्लीन एनर्जी का ऑप्शन अवेलेबल है तो होम एप्लीकेशन के अंदर आपको क्लीन एनर्जी चार्जिंग वाला ऑप्शन भी देखने मिलेगा आपके होम पॉड के लिए। तो अपने पास है नहीं वो, लेकिन आप उस कंट्री में रहते हो यूएस वगैरह में जहाँ पे ऑप्शन होते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा देखने। कैमरा के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर दिया, मतलब एक सेटिंग नहीं आ गई है, वो बताता हूँ मैं आपको। सेटिंग में चलते हैं सबसे पहले, और ये जो आईफोन 15 सीरीज आई है, 15 प्रो 15 प्रो मैक्स, उसका जो इवेंट था कल का, आपने देखा ही होगा वीडियो, तो उसके साथ जो है ये वाले नए फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। तो कैमरा में सेटिंग में जाते हैं, फॉर्मेट्स में जाते हैं, और यहाँ पे प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल आपको ऑन रखना है, फिर आपको प्रो डिफॉल्ट में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HEIF मैक्स करके आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है। अब इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो या फिर आप चाहे तो कैमरा के ऐप से भी कर सकते हो। HEIF के अंदर भी आप 48 मेगा
ऑफिसर की फोटोज निकाल सकते हैं। एक बार कैमरा ओपन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नया ऑप्शन जो है आपको देखने मिल रहा है और इसको आप टैप करके ऑफ या ऑन कर सकते हैं। रॉ अगर मैक्स फोटो लेना है आपको तो पॉसिबल है, इसको ऑफ करेंगे तो प्रो रॉ मैक्स वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। और इस ऑप्शन को अगर आप करेंगे लॉन्ग प्रेस से यहाँ पे आप देख सकते हैं HEIF मैक्स का ऑप्शन आ गया, 12 मेगापिक्सल प्रो रॉ का ऑप्शन आ गया और रॉ मैक्स का ऑप्शन आ गया। HEIF मैक्स में लेना है तो HEIF मैक्स यानी फुल 48 मेगापिक्सल का जो इस्तेमाल है फोटोज के लिए आप कर पाएंगे। तो ये अच्छा अपडेट एक दिया है एप्पल ने। अगर आप iCloud Plus सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हैं 50 GB 200 GB 2 टेराबाइट के ऑप्शंस है, लेकिन इसके अलावा और भी बड़े ऑप्शन जो है अब आपको देखने मिलेंगे। कल ही इवेंट में एप्पल ने अनाउंस किया था तो ये ऑप्शंस के साथ भी आप जा सकते हैं। iStop के ये जो है 50 GB वाला इसको भी एप्पल अपग्रेड कर दे। 75 रुपीज पर मंथ वाला वैसे इनफ होता है व्हाट्सएप का बैकअप वगैरह बनाने के लिए, लेकिन और चाहिए आपको तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन जो है वो काफी महंगे हो सकते हैं। रिलीज नोट्स एप्पल ने इस वाले अपडेट के जो है अभी तक पुश नहीं किया है, तो यहाँ पे कुछ जरूर बग्स होंगे अभी भी जो फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स का एप्पल फिक्स करेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई रिलीज नोट जो है एप्पल ने मेंशन करके नहीं दिया या रिलीज नहीं किया इस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों नेटवर्क परफॉर्मेंस, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप ये सारी चीजें अच्छी है और स्ट्रॉन्गर नेटवर्क परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे एप्पल दे पाए तो अच्छी बात होगी, लेकिन फिलहाल मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और डिपेंड करता है आपके कैरियर पे भी। और बाकी यहाँ पे मैंने जो है eSIM वाला सेटअप करके रखा है एयरटेल का, तो कोई इशू नहीं है, मुझे सब चीज जो है सही तरीके से काम कर रही है। बाकी बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों तो अभी जो है इसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा अर्ली हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल की है रात में इवेंट की तैयारी थी, वीडियोस बना रहा था तो इतना मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। देख सकते हैं आप स्क्रीन एक्टिव टाइम काफी कम है। बैटरी लाइफ iOS 17 में इतनी ग्रेट नहीं है 14 Pro Max होने के बावजूद मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। पहले 2-2 दिन की बैटरी लाइफ मिलती थी, लेकिन अभी 1 से 1.5 दिन की मिलती है। थोड़ी और बेटर बैटरी लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब स्टेबल वर्जन के कुछ और वर्जन जो है हमारे सामने आएंगे। फिलहाल बैटरी लाइफ ओके होगी। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आपको iOS 17 के RC वर्जन पे जो है अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा पे हो तो आपको ये वाला अपडेट डाउन इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई रीजन नहीं है इसको इंस्टॉल नहीं करने का। और कैसे आप जा सकते हैं बेटा वर्जन से स्टेबल वर्जन पे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो iOS 17 का RC वर्जन होता है ये एक्चुअली स्टेबल वर्जन नहीं होता है। जो लोग बेटा वर्जन पे होते हैं उनको स्टेबल वर्जन जो है पहले पुश किया जाता है, मतलब 18 तारीख को सभी को मिलेगा, तो हमको जो है 12 तारीख की रात को या 13 तारीख की सुबह में ही जो है ये अपडेट देखने मिल गया, ताकि हम इसको चेक करें, टेस्ट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा एक और RC वर्जन एप्पल पुश करेगा। तो कैसे जा सकते हैं आप स्टेबल वर्जन से बेटा वर्जन पे? कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप बेटा वर्जन पे अभी हो, स्टेबल वर्जन आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो आपकी सेटिंग जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाओ और यहाँ पे आपके जो बेटा अपडेट्स है इसमें डेवलपर बेटा, पब्लिक बेटा जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे ये वाला अपडेट आ जाएगा, इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लो। आप जो है यहाँ पे स्टेबल वर्जन पे आ गए अपने आप ही। एक बार आपने RC वर्जन का इंस्टॉलेशन कर लिया और 18 तक वेट किया और एक RC वर्जन नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेबल वर्जन पे आ चुके हो। लेकिन एक और RC वर्जन आता है, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसको भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। और जब फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा उसके बाद आपको बेटा वर्जन की अपडेट्स नहीं चाहिए, स्टेबल वर्जन की ही अपडेट्स चाहिए, तो बेटा अपडेट में जाके इसको आपको ऑफ कर लेना है। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं हमने एनरोल किया था लेकिन यहाँ पे बेटा अपडेट्स का ये ऑप्शन हमको नहीं देखना है। भाई हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाते रहेगा। कभी फ्यूचर में आपको डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा पे जाना है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ रख लेना। 18 के बाद की बात करो, 18 के पहले नहीं करना है आपको ये चीज। और 18 के दिन मतलब 18 की सुबह को मत करना, 18 की रात को इंडिया के अंदर जो अपडेट आता है तो उस रात में आपको जब मैं वीडियो बना के बता दूंगा सेटिस्फाई हो जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पे। उसके बाद जो है उसको ऑफ कर देना। iOS 17 RC वर्जन की ये तो कहानी आप समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे एक और अपडेट आई हुई है जो कि है iOS 16.7 RC। अब ये एप्पल ने क्यों पुश किया है, क्यों रिलीज किया है, अगले वीडियो में आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बेकार में लंबा होते जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Which will get obliterated if a bench beyond a certain number, given the numerical strength of the court at a particular time, is constituted. So therefore, that power, that administrative power exercised by the bench. मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इसका मतलब है पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि जी फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकती। in cases, in circumstances में ये हो सकता है, जैसे अभी भी है। रिपरकशंस तो सोचिए आपकी बात की कि यही प्रिसाइसली सवाल है कि इस लॉ की इस सेक्शन की वजह से। So let me put it differently. ये now फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकती। नहीं, फुल कोर्ट आप बैठेंगे आर्टिकल 184 questions which are the most important
a question that can ever be raised before the court? In exceptional circumstances, it might be so. But does that is that enough to just take away the right of appeal? Attorney General, the other way to look at it is that if the committee were to the view that the matter is so grave and so serious that a larger bench which will not provide. So let me put it full court or any now full court आप बैठे in exceptional matters. So it doesn't take away the power to constitute a larger bench or a full court, but at the same time it will be saying that it's so important that a collective wisdom will prevail. So there is no, I mean, doesn't really, it can be easily It can be reconciled. My Lord, Section 6, right to appoint. Section 5 can be read down. My Lord, to that extent, my Lords can hold that in exceptional cases and when a situation this sort arises, that be so. Right of appeal पे substantive right नहीं है जो statute. Ladyship, look, we are faced with a situation here, and let me just be very candid now. We have had recording, we have had car case, and we have God knows what not, and all of that has happened under 184(3). With great respect, And Steel Mill is a classic example. Steel Mill was in profits at the time when all of that happened, as far as my information goes. It had 12 billion worth of raw material lying there. And now we are faced with an asset which is constantly bleeding. How many of those were full court? How many of those were full court judgments? Well, Lord, may not be. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना. Not be. मैं ये कह रहा हूँ कि इसको reconcile किया जा सकता है. यही तो point है कि एक तरफ आप कह रहे हैं हम right of appeal दे रहे हैं in order to address precisely these kind of things. दूसरी तरफ कह रहे हैं चलो full court बन जाए तो बन जाए. Full court बन जाए मैं ये कह रहा हूँ कि there might be issues in time. आप kindly जरा थोड़ी सी नहीं there might be issues in time. Applications of your submission तो kindly देखिए. मैं उसको ये इस तरह से आपको कहता हूँ कि देखिए Attorney General साहब, let's be, we are all grown ups, right? Attorney General साहब, can I just the problem arose, I think thousands of articles have been written, lawyers have spoken about it. We keep talking about the two chariots, but let's place some emphasis on the lawyers also say. There has been allegations, and I can deny it, but it doesn't. Public opinion thinks that 184(3) has been misused, jurisdiction has been exceeded. Okay? So what you are saying is, first of all, we did not create the mess. You created the mess. We are trying to solve your mess. What did we do? 3-member bench judgment, 184(3), final judgment. Nothing can be done. Now we are concerned about full court 3. What about the 3-member bench judgment? Jurisdiction has been exceeded. Which did record it. It was not what you are saying is a large bench. First of all, we did not create the mess. Smallest bench in the Supreme Court. We are trying to solve what could you do? What did we do? 3-member now you come in advisory jurisdiction, we have to find ways and nothing can be done. Because now it's the interest of the country at stake. I would rather surrender my high status and place it at the feet of the taxpayer public of Pakistan rather than give them a whopping liability of $6.5 billion because the independence of the judiciary, they'll say, what are you talking about independence of judiciary? Independence of Pakistan will disappear if you labor this much of debt on Pakistan, 6.5 billion. It's not easy, we don't understand the repercussion of things. Fine, I'm not saying that judges who decided that, they did what they thought at the time, how they were assisted according to their conscience correctly in their minds. Yes, but we make mistakes. Suppose I was a member of this bench. I would love this thing if it came to my mind, repercussions. Okay, now there's a right of appeal. I can undo. Review jurisdiction, you know what the review jurisdiction is. Take the case of Zulfikar Ali Bhutto. Yes. Supreme Court split. Review unanimous because the scope of review is very different creature. It is error floating on the record, so they didn't even go there. That could not be rectified through review. You had to create 184(3). If आपको simple बोलना चाहिए, अगर आप अपने इतने ज्यादा काम ना करें, थोड़े हदूद में रहें, शायद हमें लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती. हमने भी तो थोड़ी गलतियां कर ली. हमें देखिए हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, अन्ना बहुत बड़ी बन गई है और तकब्बुर. हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है. हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को.
मान ले गलती की है, ठीक है, अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जज मेड लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है। The minute I say that, please file a reference against me that I'm violating my oath of office if I say even this, कि I will endorse these subsequent acts. तो मुल्क का भी तो सोचना चाहिए। हमें अपनी सिर्फ अपनी अना और आपको अना और इन ख्वाजा साहब मुझे नहीं पता उनको क्या मसला हो रहा है, उनको हमारा फिगर पड़िए। हम स्यूमोटो हर जगह करते हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं स्यूमोटो किया? Why are we waiting for him to bring an act? 10 पिटिशंस आ गई, पब्लिक में से तो कोई नहीं आ रहा है। पता क्या मसला है लोगों का? उनके तो कोई मसले नहीं, वो कहते हैं भाई हमारा केस चला के खत्म करना है। Sorry, I'm diverging, but we have to see the larger picture also. We have to see work within the constitution where every citizen gets its due. But what are we doing? What are we taking away from him? Focus on that. Nothing, my lord. And Section 6, my lord. इसमें अटॉर्नी जनरल साहब लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत देयर इज अ राइट ऑफ अपील, लेकिन कई केसेस में डिपेंडिंग ऑन द इश्यूज the high courts constitute larger benches and therefore that right of appeal is not availed. लेकिन जहाँ तक देखें ना, जो अभी बात हुई है 184(3) is discretionary. Now यहाँ पे जितनी बात हुई है, even the petitioners, their counsels, they all agree that this law is in the interest of the litigants. It actually enhances access to justice. So why shouldn't we just not exercise our jurisdiction? Because in exercising jurisdiction, we will be going against the interests of the litigants. Why should we go against the rights of the litigants? It is in their interest and in their favor. एक प्रॉब्लम अभी जो अपील के बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज आंसर टू इट। सपोज आज हम 15 बैठे हैं, कल 2 वैकेंसीज हैं, वो भी फिलअप होती है, 17 के 17 बैठते हैं। इशू यहाँ पे ये कि अपील की रेमेडी नहीं हो, इस एक्ट के तहत अवेलेबल नहीं हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 181 में, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट कैन बी आस्क्ड टू एक्ट टेम्परेरली एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वो आपका एक्ट कहता है कि लार्जर बेंच विल हियर द अपील, सो add one judge, this is larger bench, appeal is there. No problem, I think problem is solved by the constitution. The remaining judges would be the same. Yes, of course. फैसला तो वही आएगा। This was just like review. आपने conclude कर लिए? My lord, I just now the section, as far as section 7 is concerned, I've already submitted. I think this provision surely addresses the concerns of the litigants. Fixation of cases under section 7. Provision of intra-court appeal, that is to be seen. Intra-court appeal जो आपकी है, उसको देखना है। इधर सिर्फ प्रॉब्लम ये जो आपने रिट्रोस्पेक्टिविटी दी है इस लॉ को, उससे हमारी पेंडेंसी और ज्यादा नहीं हो जाएगी? My lord, at one end now, my lord would have to see हम सारी बात चलें, ठीक है, मान लेते हैं जी, आप इंटरेस्ट कर रहे हैं, उधर आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव, अब आप सोचिए 185(3) का और आप इस तारीख से दे रहे हैं, यू गोइंग बैक अप, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू देन? वी द होल विल बी गटेड। How many cases would there be, my lord? And no limitation period is ये here. तो आप ना करें ना। My lord, ये थोड़ा I सा think what has been आप लाएं what the parliament has, चलो ठीक my है। lord, what the parliament has tried to address here is. So you see, it is very open-ended. Prior to the commencement of this act, so it will go to 1947 or what? जितने 185, 73 से शुरू हो जाएंगे। My lord, 1947 तो नहीं, 75 में पहला हुआ था। एक बात है, अब इसमें there is open-ended ना, and then you have fixed a limitation of 30 days for filing appeal prior to commencement of this act, means all previous decisions, all persons can come to this court within 30 days after the sustaining the. I think 30 days have expired. I don't know how many came ये actually. बताइए अटॉर्नी जनरल साहब, जरा ये मालूम करें दफ्तर से कि इस इनैक्टमेंट के बाद अपील कितनी फाइल हुई है इस प्रोविजन के तहत? वैसे नहीं हुई होंगी because the law was सस्पेंडेड। ओके couldn't have taken effect. फिर एक और छूट जाएगा ना। ये बताइए जितनी दफा इस कोर्ट ने मार्शल लॉज को और डिक्टेटर्स को वैलिडेट किया है, कैन द पीपल ऑफ दिस कंट्री फाइल
appeals and Review. have those judgments annulled? Why not? I would hope so. I think this is our accountability. Let us be open about it. Why do And my we lord, fear just if to it's... just quick Otherwise, history, we'll I be brushing think things under the mat. 1975, Manzoor-e-Lahi was the first case under 184.3, and thereafter, after 13 years, it was Benazir Bhutto case, 1988. ज़्यादा जो jurisdiction exercise हुई है वो perhaps But where पिछले do you 15 draw साल the में line? हुई है. Where do you draw the line? I mean, the question is, if there is transparency, then let it be. Let it Why be. brush something under the mat and look into some? Why? My lord, Let's undo Federal Shariat Court, Maulvi Tamizuddin Khan case. Effectively, it won't mean anything, but maybe it will look good, I don't know. Because everybody's dead or whatever, long past. Go on. My lord, I would conclude my submissions with this. I have the written submissions along with Reliance's. I have noted down one question जिसका detail में ये हमने सेक्शन submission 6 करना पे है, भी वो- बता दीजिए लर्नेड अटॉर्नी जनरल, My ये lord. जो आपका Right राइट to टू counsel. यस बिकॉज इट Now- इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऑर्डर 26 है. power of the review. जी, order So you 26 have said that the party shall have the right to appoint counsel of its own choice. पहले जरा Counsel. my lord का 188 पढ़ लें, जो refer कर रहे हैं my lord. 188 is the Supreme Court shall हाँ, पढ़ लें जरा. have power subject to the provisions of any act of parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. Yes. So this power under the power of review Supreme